ओंटारियो सरकार नवा लैजिस्लेशन लैके आई है जिदे तहत पेनल्टी स्ट्रिक्ट पेनल्टीज़ होगियां अगर कार चोरी होंदी है, स्टंट ड्राइविंग होंदी है या इंपेयर्ड ड्राइविंग ड्रिंक एंड ड्राइव करके तुसी रोड ते गड्डी चलाने हो तो उहदे लई स्ट्रिक्टर पेनल्टीज़ ओंटारियो सरकार ने प्रपोज की हैं। सब तो पहले गल करते हैं कार जैकिंग ते कार दी चोरी दे उपर। कार दी चोरी दे उपर अगर पहला ऑफेंस है, पहली बार कन्विक्ट हुंदा है कोई, तो उहदा जिहड़ा ड्राइविंग लाइसेंस है 10 साल लिए सस्पेंड हो जाएगा। अगर सैकेंड टाइम कन्विक्ट होंदा है, सैकेंड ऑफेंस है, तो ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो 15 साल लिए सस्पेंड होएगा और थर्ड ऑफेंस के उपर लाइफ टाइमली ड्राइविंग लाइसेंस जोड़ा है सस्पेंड हो जाएगा। उसके बाद तुसी दोबारा व्हील्स के पिछे नहीं बैठ सकते अगर थर्ड ऑफेंस है। ये उपर क्रिटिक्स की अपनी अपनी थॉट्स है। किसी का कहना है कि बहुत लेट आए आ जोड़े स्टैप्स है और बहुत घट आए, क्योंकि कार चोरी जी ऑर्गेनाइज क्राइम च मनिया गया हीनियस क्राइम है। ये उपर पहले ऑफेंस के उपर ही लाइफ टाइम बैन होना चाहिए और जेल होनी चाहिए है, बेल नहीं। बेल नूं रोकण लई लोगों की गलबात कही गई है कि बेल नहीं मिलनी चाहिए। जिहड़ा कन्विक्ट है हीनियस क्राइम के उपर उन्होंने जेल के पिछे रहना चाहिए। लेकिन सिर्फ पेनल्टीज़ ओंटारियो सरकार की तरफ तो प्रपोज की गई हैं 10 साल सस्पेंशन, 15 साल सस्पेंशन एंड लाइफ टाइम सस्पेंशन अगर पहला ऑफेंस है, सैकेंड ऑफेंस है और थर्ड ऑफेंस है। हुण गल करते हैं स्टंट ड्राइविंग ली। वैलकमिंग स्टैप्स है ओंटारियो सरकार के कि इदां दे स्टैप लिते गए हैं। अगर स्टंट ड्राइविंग के उपर तुसी पहला थोड़ा ऑफेंस है, पहली बार कन्विक्ट होने हो, स्टंट ड्राइविंग करते, जिगजैग ड्राइविंग या टार बर्न्स करने या होर भी असी देखे काफ़ी स्टंट ड्राइविंग हाईवेज़ से होंदी है, ओवर स्पीड होंदी है, स्टंट ड्राइविंग करते हैं, तो पहले ऑफेंस के उपर 1 साल लिए ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड होएगा। दूजे ऑफेंस से सैकेंड टाइम कन्विक्ट करते हो तो 3 साल लिए ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड होएगा और अगर थर्ड ऑफेंस है तो लाइफ टाइम लिए जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो सस्पेंड होएगा। हुण गल करते हैं इंपेयर्ड ड्राइविंग ली। इंपेयर्ड ड्राइविंग मतलब ड्रिंक एंड ड्राइव करके अगर तुसी रोड ते फड़े जाने हो, अगर कन्विक्ट होने हो, अगर तुसी किसी दी डेथ हो जाती है थोड़े इंपेयर्ड ड्राइविंग दे नाल, थोड़े ड्रिंक एंड ड्राइव दे नाल किसी दी रोड ते डेथ हो जाती है तो थोड़ा लाइफ टाइम लिए ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड हो जाएगा। तुसी दोबारा व्हील के पिछे नहीं बैठ सकोगे। और ये उपर है कि अगर पहला ऑफेंस है इंपेयर्ड ड्राइविंग का, अगर पहला ऑफेंस है तो थानू मैंडेटरी जो है इग्निशन इंटरलॉक डिवाइस इंस्टॉल करना पेगा। सो असीं फिर दस दिए इंपेयर्ड ड्राइविंग के उपर अगर किसी की जान चली जाती है, डेथ हो जाती है तो लाइफ टाइम की सस्पेंशन होएगी ड्राइविंग लाइसेंस की। और अगर फर्स्ट ऑफेंस है, किसी की डेथ नहीं होंदी लेकिन ड्रिंक एंड ड्राइव करके फड़े जाने हो तो थानू मैंडेटरी जोड़ा इग्निशन इंटरलॉक डिवाइस है वो इंस्टॉल करना पेगा गड्डी च। और उहदे नाल की हुंदा कि थोड़ी गड्डी स्टार्ट नहीं होएगी अगर ड्राइवर दे जिहड़ा ब्रैथ के अंदर अल्कोहल की लैवल होएगी तो गड्डी स्टार्ट नहीं होएगी। वो डिवाइस थानू मैंडेटरी इंस्टॉल करना पेगा। और जिहड़ा रोड साइड ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंशन है वो 3 to 7 डेज़ और 7 to 14 डेज़ फर्स्ट और सैकेंड ऑफेंस से आ जिहड़ी प्रोविजनस आ जिहड़ियां प्रपोज की गई हैं पेनल्टीज़ ओंटारियो सरकार की तरफ तो वेलकमिंग स्टैप है। लेकिन कार जैकिंग जिहड़ा कि हीनियस क्राइम है, एक बहुत वड्डा ऑर्गेनाइज क्राइम है, उहदे उपर पेनल्टीज़ लोगों का कहना है कि होर टफ होनियां चाहिए सी, बेल नहीं मिलनी चाहिए। उहदे उपर जिहड़ा कन्विक्ट है, जिहड़ा कार चोर है, उन्होंने जेल के पिछे रहना चाहिए, बेल नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन आ वेलकमिंग स्टैप्स है सरकार की तरफ से जिहड़े कि स्टंट ड्राइविंग, इंपेयर्ड ड्राइविंग और कार जैकिंग के उपर प्रपोज की गई हैं पेनल्टीज़। Like thousands of other Ontarians every year, they were unlucky victims of auto theft. Every 14 minutes, a car is stolen in Ontario, with a 78% increase in violent carjackings in the last 3 years. Over 25,000 cars were stolen in Toronto, Peel and York region alone last year, costing businesses and consumers over $1.2 billion. It is unacceptable that people are being forced out of their vehicles at gunpoint and forced to look over their shoulders while pumping gas or pulling into driveways. That is why I am proud to announce legislation that would, if passed, suspend driver's licenses for people convicted of auto theft. This includes a lifetime license suspension for convicted auto thieves from ever driving again upon a third conviction, with 10 to 15-year suspensions for first and second convictions after serving sentences under the criminal code. This will apply to convictions that include aggravating factors like violence, use of a weapon, use of force, threat, or pursuit of financial gain. Driving is a privilege, not a right.
If you're shameful enough to prey on other members of the community for your own reckless gain, you'll lose that privilege. I know this isn't a silver bullet, and more changes working with the federal government to achieve meaningful reforms are needed, but the joke is on criminals if they think Ontario is going to stand by and not do our part. While Ontario has some of the safest roads in North America, in 2022, almost 11,000 immediate roadside license suspensions were issued for street racing or stunt driving, putting countless lives at risk. That is why our legislation would also amend the Highway Traffic Act, closing a loophole to ensure that anyone convicted of stunt driving faces a mandatory minimum license suspension. This will mean at least 1 year suspension on the first offense, 3 years for the second, and an indefinite suspension upon third conviction. We've heard loud and clear from police forces and community advocates that province street racing and stunt driving are becoming more common. We will continue to use every tool in our toolbox to stop it in its tracks. Everyone deserves to come home safely to their loved ones at the end of their day. And everyone has a right to feel safe in their communities. These changes are another step Premier Ford and our government are taking to build a stronger and safer Ontario for everyone. In the coming days, we'll be unveiling more First in Canada changes to help make our province the best place to live, work, and raise a family. Thank you very much. And the Ontario Provincial Police for this important announcement. Vehicle left over the past year has unfortunately become a major concern. Vehicle theft. And the public safety of our communities will continue to be my top priority. Our government has been clear. Stealing cars is not acceptable. And while the criminals are becoming more advanced, so are we. Putting our foot down on auto theft is our priority, and no Ontarian deserves to have their vehicle stolen. And under the leadership of Premier Ford, we're taking every step to ensure that if you steal a car, you will be punished to the fullest extent of the law. In this province, we will not allow criminals to violently carjack in your communities, especially in broad daylight. These crimes are more than just stealing a car. It threatens the safety of our children, our parents, and our loved ones. This is not what Ontario stands for, as we all have an inherent right to live safely throughout our province. Enough is enough. This new legislation, if passed, will introduce a lifetime license suspension for auto thieves. First-time offenders convicted of auto theft will face a 10-year license suspension. If the convicted chooses to offend for a second time, they will face another 15-year suspension. And after 25-year license loss, those that continue to steal a vehicle for a third time will face a lifetime suspension. This will have no mercy on criminals who think it's okay to steal a vehicle, because it's not. This will lead to more consequences if it continues. And we're doing everything we can to fix this crime. This proposed legislation will also target those caught stunt driving. Ontarians do not deserve to be driving safely and have an irresponsible driver fly past them, putting innocent lives, including their own, at risk. In the simplest of terms, speed kills. All too often, we see drivers disobey the speed limits across the province, and this is unacceptable, especially for the diligent drivers that follow the law. We're implementing mandatory minimum license suspension for 1 year on the first conviction, and this will be followed by another 3 years for the second offense and life suspension on the third. The privilege to drive will be taken away for life if one decides to try their luck too many times. When it comes to the safety of our roads, we're pulling out all the stops to make sure that you and your loved ones feel safe inside and outside your home. These new measures, if passed, will tighten up our laws and foster safer communities for us to work, to play, and to raise our children. This is very important to our government, and we hear your concerns. We will not stop until every car thief and street racer is held accountable.
I'd like to thank once again my friend, Minister Sakaria, the Minister of Transportation, for allowing me to be part of this special announcement, because these actions, if passed, will inherently make our streets and communities so much safer. By continuing to build on the historic strides of our government, combating auto theft ensures that a safe Ontario remains strong. And to the criminals, we're putting you on notice. Your time is up. We will put you out of business. Thank you. Merci beaucoup. Miigwech.